साहब मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, अगर उसी में डाल दें आप लिस्ट में अपनी। जी मैं इधर हूँ जी। जी सर। भाई बस सिर्फ सिंपल सा आपकी जो समझ आई है मुझे आपकी, कि ये सारा कानून अगर यही सारा फुल कोर्ट बैठ के बना ले तो सब ठीक है। नहीं सर, सुन लीजिए, सवाल तो सुन लें। जी जी। कि 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत है। ये आपकी बहस है ना सारी? नहीं सर, ऐसे नहीं है। आपने यही कहा, आपने कहा ये सारी चीजें करो, लेकिन नहीं सर ऐसे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं सर ऐसे नहीं है। चलिए बस नोट कर लें। मैं नोट कर लिए। जब सुप्रीम कोर्ट एक आप जवाब ना दीजिए ना, बाद में मैं बाद में जवाब देता, ठीक है? अदरवाइज तो आपकी मुश्किल काम हो जाएगा। मैं आई एम क्वाइट नहीं, आगे बढ़ते हैं। I have worked with all of you, sir. आगे बढ़िए। I have no problems. हजूर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. I understand what Shah Sahab is suggesting and saying, and he has mentioned this in many other cases. Yes, ma'am. If I may ask a question as a supplemental to the question that my learned brother, my learned colleague has asked. Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. Yes, ma'am. So the question, surely, this is the question to you. Surely, the question of what the court can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary, and can Parliament intrude upon, with all due respect to Parliament, they have their legislative competence, the Constitution is supreme, that is what is paramount, that is what is there. Can Parliament, in professed exercise of a legislative competence under Article 191, trample upon, I'm using this word a bit deliberately, I don't intend to show any disrespect to Parliament, but can it encroach upon or intrude upon something that would affect the independence of the judiciary, something that relates to practice and procedure, which the court may or may not do, but can do for itself? Can Parliament do that? In other words, when Article 191, this is part of that question, starts with subject to the Constitution, the law part of it is also being subject to the Constitution, and the Constitution says independence of judiciary is a fundamental right. Can Parliament directly or indirectly take away a fundamental right? Not ordinary legislation. आप नोट कर लें। If I will really request my colleagues that they are making, including myself, are making your life impossible. No, please, no, you are very fine. I'm learning. No, we are not here to teach you anything. You are here to help us. Now, please, we're not even reading the act, and we are getting bogged down into details. Let us go through it, formulate your contentions. We will bombard you with 100 questions. You respond to them later. You respond to everything, then the matter gets lost. Again, we are stuck with section. We are not even making progress. Please continue in your way. आगे बढ़ते हैं. But let me say this. Mr. Khwaja, Khwaja sahab, section 5 से आगे पढ़ लीजिए. Another question with regard to appeal. आप देखें, हमारे पास already एक dictator का ordinance था, Law Reform Ordinance 1972. उसके तहत Article 199 के लिए appeal provide की गई before 2 member benches. We are following it. क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 199 है, आर्टिकल 183 84(3). तो ये क्या दोनों में गलत है? तो फिर वो भी गलत है. It is noted. We will answer this thing, that what Parliament can do and what Parliament can do many things. My Lord has said so, but there is a procedure provided. Will answer that. भाई साहब, अभी जो आपकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज एक्ट I will not answer it. पहले एक्ट को खत्म कर Section 5 से आप आगे बढ़ लीजिए. ख्वाजा साहब, you have collected 100 questions. Just here, the Law Reforms Ordinance of 1972. This is the question to you. Regulated right of appeal within the High Court itself, an intra-court appeal. Was there ever a clause on the jurisdiction and on the legislative competence in relation to jurisdiction and powers of the High Court in the same manner as it is in the Supreme Court? As I read it, the clause is there only in respect of the Supreme Court. Law Reforms Ordinance
didn't do anything with the Supreme Court. It only affected intra-court appeals within the High Court, both in the concurrent list, which is now no longer there, and also the clock was only in relation to Supreme Court. Question: is therefore the Law Reforms Ordinance of 1972 a parallel valid example which relates only to the High Courts, a valid parallel example in relation to what Parliament seeks now to do in the 2023 Act? This is the question. With relation to the Supreme Court, where there is apparently a clock. Mr. Noted, sir. And appreciate. Section 5. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of Article 184 of the Constitution to a larger bench of the Supreme Court, and such appeal shall, within a period not exceeding 14 days, be fixed for hearing. And second part, the right of appeal under subsection 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under Clause 3 of Article 184 of the Constitution prior to the commencement of this Act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this Act. I'm not going to analyze it. I have my serious objection on this, and I will. What you have to do, you're not going to do it. Well, You have challenged a law, you have to do, you have to challenge that it. appeal shall lie within 30 days. We've read the English of it. What's wrong with it? Tell us that. My lord, as far as Section 5 is concerned, Is it good, is it bad? First tell us that. Well, it says that appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under Clause 3 of 184. May I respectfully submit that if an appeal is provided against a decision under 184.3, then why is this not they included in Clause 2? Whereby my 184.3 application will be disposed of. Is that the way I was taught law was not the council asked questions from the bench. It was the bench would ask questions. Are you supporting this provision or not? First say, yes, I am, no, I am not. These are my reasons. My lord, I have a reservation on this. You may have reservations. Tell us what's unconstitutional about it. Then let me explain it to them, because if I start explaining it at stage, it will take your time. But I will say this thing, that this Section 5 should have also, this right of appeal should also have been given in Section 2. Should is different from ultra vires the Constitution. It ought to have been given. What then? You go and move a bill in Parliament. We are saying, are you opposed to Section 5? Give us legal reasonings, or you say it's okay. अब उनसे आप पूछेंगे. You have done this. नहीं ये नहीं आप जवाब दीजिए ना. आपने petition लाए. This is not fair. To make it more simple, you don't want your client to have a right of appeal. No, sir, First say it's unconstitutional, it's constitutional. You're not saying anything, you just... यहाँ कोई discussion होता है, sorry, not on. This is your job in office. My lord, may I say this thing that we divided the... Please answer the question, is this constitutional or unconstitutional? It is unconstitutional. I can't hear you. वायरिस तो बताइए ना, वायरिस क्या है? Hey, unconstitutional आपके जहन में और नहीं है? Unconstitutional. Well, it's, my personal opinion is this, that this Section 5 goes beyond the powers which were there with the Parliament. So now formulate a contention on that. Please formulate a contention. For the simple reason, my lord, if an appeal is to be provided, it's a substantive right. There has to be a constitutional amendment to provide an appeal under Section 184.3. Okay. And this appeal through this act, an ordinary law, cannot provide. I can't seem to reconcile your, which I appear to me to be contradictory submissions. No, Please let me finish. Please let me finish. Yes, ma'am.
On the one hand, you are saying, where will I go? Where will I go? Here, the Parliament has given you a right. You say it's unconstitutional. So please don't make contradictory contentions. I'm only saying this thing, that it's a good thing that the right of appeal will give, but the manner in which it has been given Man, is take it, wrong. please take it. I'm saying this thing, that this one, the right of appeal given in this manner by an ordinary law. We will not strike it down because of manner. You have to show us ultra vires the It is Constitution. unconstitutional, sir. But saying so, no argument. Our argument is this, that 184(3) is a substantive provision of the Constitution. If a You right are of happy with no appeal. if a right of appeal has to be given, there has to be a constitutional amendment. Okay, point taken. Move ahead. ठीक है जी? ये बात नहीं पाई। I just have a question to you with regard to section 5 from what you have just said. Kindly read it again. An appeal shall lie within 30 days from an order of a bench exercising jurisdiction under clause 3 of Article 184 of the Constitution. Just kindly stop. So this order, the question to you is, has two parts. The first part is, this question, this order, which is now made appealable, is it a judicial order or is it administrative type of order? And if it is a judicial order, then how can Parliament, in exercise of a legislative competence conferred by Article 191 in relation to practice and procedure, confer a right of appeal? Because, if I may, and this is the, I apologize, my question has three parts. Because if I may touch upon what my learned colleague, Mr. Justice Mansoor Ali Shah, said recently, that this is, recently meaning in the hearing of the case, that anything that this law does, the Supreme Court can itself do in exercise of rule-making power. Question therefore is, can Supreme Court confer a right of appeal in exercise of rule-making power against a judicial order under 184(3)? If the answer is no, then it seems to me logically that Parliament also can't do it, because the two things are parallel. Therefore, question, is it therefore unconstitutional? Unconstitutional. You don't have to give an answer. It should have been, if the right of appeal had to be given, it should have been given through an amendment. Note it down. Yes, next is right to appoint. आप चाहें आप हमें लिखकर तहरीरी तौर पे भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? अगर आप आगे अपना आर्गुमेंट चलाते रहें, जी आगे बढ़ते हैं। 6 को पढ़िए, 6 है जी, right to appoint counsel of choice for filing a review application under Article 188 of the Constitution. A party shall have the right to appoint counsel of its choice. I don't object. I personally don't object. Personally की बात कोई नहीं है आपके? I'm not objecting to this because I feel that okay, it's okay. चलिए, let's get on with it. Section 6 is okay. Okay. Application for fixation of urgent matters, when an application pleading urgency or seeking interim relief filed in a cause, appeal or matter shall be fixed for it. My objection on this is again this, that this is a function of the Supreme Court itself, because this relates to the Please procedure. tell us, is it ultra vires, the Constitution? It's ultra vires. Thank you. I just have a question to you on this, on section 7. Now, section 7 really relates to what is regarded as the nitty-gritty of procedural law. I mean, this is really going, say, in a civil court, into the very depths of CPC, or the way we in the Sindh High Court have original side into the Sindh Chief Court rules original side. Yes. The question therefore is this: the legislative competence under Article 191, if it allows Parliament to go into so much depth into the very nitty-gritty of procedure of the court, then surely Parliament has an untrammeled power to regulate the court itself. The power to regulate, if I may adapt, is the power to destroy. Does this not effectively destroy the independence of the judiciary? This was my very first point which I said, that the functions of the Supreme Court have been virtually been taken over. Is this not contrary to the
fundamental principle of the Constitution, trichotomy Trichotomy of of powers. powers. So where the legislative organ is intruding upon the nitty-gritty and the procedural aspects which have specifically been left to the Supreme Court under Article 191, is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? That is why saying 7 is ultra vires. इसमें ख्वाजा साहब, Yes, sir. I think there's a very crucial and important question. The jurisprudence of this court, developed till today, has only looked at one aspect of independence of judiciary, that is freedom from external factors. But there are two other extremely or probably more important factors that affect independence of judiciary, and that is internal independence and institutional independence. What the Parliament appears to be looking at is the aspect of internal and institutional independence, where probably in the perception of Just note kar rahe. the public or the Parliament, those powers exercised over the years by the Chief Justice under the rules, they actually eroded the internal and institutional independence. So when we talk about independence of judiciary, these two aspects that have been ignored till today, they are probably more important. Sir, we will certainly answer your lordship. So, but please, one question also. Since we have just one section, can we just finish reading it? Raja Sahab, if I may have a supplemental on Yes, what ma'am. my learned colleague has said. Is it possible, is it constitutionally possible that if at all, and speaking for myself and with very great respect, perhaps I do not subscribe to that view that has been expressed, but I ask a supplemental question on it. Is it constitutionally conceivable that if there is such a concern about the internal independence working of of the the parliament, judiciary, that the solution is to put the power in the hands of Parliament? Would that not violate separation of powers? Yeah, Tomorrow, what is there to prevent, and this is a question to you, what is there to prevent Parliament from making a so-called law relating to practice and procedure and provide the federal government is hereby conferred powers to make rules and for the practice and procedure of the court? There is no end to it. If at all there is any trouble, and as I say, I have very deep regard and respect for my learned colleague, all of them, but in particular Justice Athar, is this really the solution? That you say, okay, here's a problem internally to the, would that not violate? Well, I mean, no, as I say, it's constitutional. Is it even conceivable? I mean, where would Sahab, that ek bring second, us? Faiz Sahab, with due respect, my This is a lord, question to my lord, this is ख्वाजा साहब, ये एक बात सुनिएगा, इधर एक आप क्वेश्चन. इसको ख्वाजा खत्म तो साहब, कर लेना सेक्शन को. आप सॉरी टू से आर्टिकल 8 खत्म कर लो. आप पढ़ ही नहीं रहे हैं. मैं अभी पढ़ लेता हूँ सर. ये सवाल बड़े पर्टिनेंट आप हर चीज आप नोट कर लेना. नोट कर भी दिया मैंने सर. कर ये कहा मैंने शुरू में ये कहा था. आप शुरू में क्या कह रहे हैं? आप आखिरी सेक्शन पढ़ लें. मैंने शुरू में ये कहा था, आपने शरीफ साहब, और जो ये आप कह रहे हैं कि जो इंटरनल वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी और का दखल नहीं होना चाहिए. ये अगर ये दखल अंदाजी होगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा. एक बात और नोट कर लीजिएगा, आपने कहा सेक्शन 5 जो अपील है वो अल्ट्रा वायरस है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर रीडिंग सेक्शन 6 it is right of review. You say that you have no objection to it. Why? Because the choice has been given to appoint the council of his own choice. No, when the law is totally ultra virus, then how you can say that section 6 is okay with you? No, my own view was that at times we have the rules are there that if a lawyer says that I'm ill or I'm out of the country or I'm not well, you do allow in review. You are declaring right of appeal ultra virus and right of review intra virus.
No, Maharaj, what I'm saying Yes, is that, according to your own that arguments. the question is that you cannot provide a right of appeal. But you can under provide the right of wait a review. minute, sir, under 184.3, if 184.3 right of appeal is given in accordance आप with मेरे ख्याल में with the constitution, then as far ख्वाहिश साहब फिर आप अपने लिए Okay, sir, आप जरा let's- सुन तो we'll- लीजिए ना we'll आप continue. ये सवाल Okay, जो sir, है जरा we'll सुन answer that आप question. सुन तो लीजिए ना well, सुन ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए मैं नहीं करता। जरा सुनिए प्लीज आप गौर और फिक्र से हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो हम इसीलिए आपको हर सवाल नोट कर लीजिए आराम से जवाब दे दीजिए आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं हर सवाल के जवाब देने लगते हैं हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछिए नोट कर लीजिएगा आगे चल करके ठीक है हम देखें हम एक दूसरे से इधर बहस करने के लिए नहीं बैठे हैं हम आपके सुनने का आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें तो ये बहुत से कानून है शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो ठीक है मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है आपको आईनी जवाब हर चीज का देना है कि ये इश्क आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर के तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है ठीक है ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही किसी की राइट एक राइट कन्फर हो रही है किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस चलें जी पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन हम ये कहूँगा आप कहेंगे वो है मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ठीक है ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है ये आर्टिकल 10(a) का हवाले देता है आर्टिकल 25 का देता है तो आप खड़े होकर अपनी राय आप कॉलम लिखिए अखबार में हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 104 ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए उसकी बहुत महदूद चीज़ें मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा कर लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था तो आप बराए करम आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी जरा आप प्लीज और हर बात को आप नोट कीजिए अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए हर बात की बहुत अहमियत होती है मेरे कोलीग की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं जरा गौर फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया फिर अब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज आप क्या सोचते हैं एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says on the contrary it appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और उसमें कोई limitation भी नहीं है तो ये public interest में पास हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question.
प्लीज एक और नोट कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court, and the other is 202 of the Constitution, which relates to High Court. Same अल्फाज है माँ सिवाय वहाँ पे Supreme Court, यहाँ पे High Court. Subject to the Constitution and law. Law तो बनाती है Parliament. तो आपके आर्गुमेंट से हम ये समझें कि पार्लियामेंट को आप लॉ मेकिंग में महदूद करना चाहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये रूल्स में सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी या हाई कोर्ट खुद करेगी. सर मैं इसका आंसर दूंगा, बिल्कुल दूंगा कि जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा और जो लॉ आएगा वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना पड़ेगा. बात ये भी कि क्या लॉ के तहत क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट, क्या नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, ये इसका जवाब देंगे जी आपको. इसीलिए तो another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to the court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additional through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. हुजूर आपके व्यूज को छोड़ दीजिए ना, आईनी तकाजे पूरे कर लेना. Number 7 is application for fixation of urgent matters. ये तो हो गया. Application pleading urgency or seeking interim relief. अच्छा, मैं आपको एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ. आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ. मेरी मर्जी. सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी. मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी. मैंने इसमें कुछ नहीं कहा. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जी. इन्होंने मेरी मर्जी ले ली, शायद मैं खुश नहीं हूँ इस बात से. मेरी मर्जी में ना लगाऊं केस. एक बहुत अहम केस है, इसमें उन्होंने लिख दिया 14 दिन में आप उसका भाई सिर्फ उसको लगा दें, कोई फैसला तो ना करें. तो मैं कहूँगा मेरी मर्जी. मैं जो ये टैक्स पेयर पैसे दे रहे हैं इस अदालत को, जो हमारा बजट है, मेरी मर्जी पे चलेगा. इस पे सवाल का जवाब दीजिए. मैं नहीं लगाता हूँ. आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको. आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं. आपके हाथ पैर कटे हुए हैं. इन्होंने हम पे भी मेरे कोलीग ने एक बात की इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की. मैं 2 बातों का इजाफा भी करना चाहता हूं, और वो आइन से पहले भी हमारे पास था. वो हमें ऊपर वाले को हिसाब देना है, ठीक है. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को. मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है. इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ. ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ. ये भी एक सवाल है. आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है, ठीक है. और हम सब everyone to exercise powers as a sacred trust. आइन में आर्टिकल 227 भी दी गई है कि शरई असूलों पे अगर आपके कोई भी कानून तसादुम करे तो वो प्रिवेल करेंगे. तो बराए करम एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से ये मतलब नहीं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मैं किसी का दरवाजा बंद कर रहा हूं तो वो तो मैं बिल्कुल मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तो आप ये पिटिशन लाते, सपोज मैं चीफ जस्टिस होता, मैं इसको लगाते ही नहीं, तो हम ये बेकेस ही नहीं सुनते. कभी 10 साल पढ़ा रहता, मैं मजबूत रहता चीफ जस्टिस के तौर पे. आप खुश थे उस बात से. तो बराए करम आप ये जो बार बार बात करते हैं ना, मेरी जाय, मेरी मर्जी, मेरी नहीं है जब मैं चीफ जस्टिस हूं. तो बराए करम हम वकीलों को बहुत ही कदर करते हैं, मगर मेरा का लफ्ज ना इस्तेमाल कीजिए. अंग्रेजी में कहते हैं मी, माई सेल्फ एंड आई आर द 3 मोस्ट यूजलेस वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता हूँ, शायद आप बेहतर कर सकेंगे. बराए करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक आइन से तसादुम. अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है इस पे. शुक्रिया. मैंने तो 3-4 जगह कह दिया है
कि जहाँ पे 184(3) में आप अपील का राइट दे रहे हैं थ्रू दिस ऑर्डिनरी लॉ, ये हो नहीं सकता, बिकॉज दिस कैन ओनली बी डन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। में लफ्ज लिखा है अग्रीव पर्सन, ठीक है। अब देखिए, अब एक मफहूम तो ये निकलता है 184(3) का कि आप ऐसे मामलों में ना उलझाएं अपने आप को जो इनफरादी नौयत के हों। अग्रीड सर। जरा अग्रीड, आपसे अग्री करें या ना करें, मैं जरा बात कर लूं इनफरादी नौयत की। अगर हम इनफरादी नौयत के केसेस फैसला करने लगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? मैं आपको मिसाल दे देता हूं। रेकोडिक का केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूं। रेकोडिक का केस आ गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। अगर हमारे पास ये जुरिस्डिक्शन होता, मैं नहीं कह रहा हूं फैसले अच्छे थे बुरे थे, मैं सिर्फ उस पर तबसरा कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमारे पास जुरिस्डिक्शन होता, हम वो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मामलों को ठीक सिमत रखने की कोशिश की, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए, इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख पे कमी ना आए। ये ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। मैं अब वजाहत कर दूं, अगर आप मुझे देना चाहते हैं मैं फिर भी नहीं लेना पसंद फरमाऊंगा। आप प्लीज आइन के तकाजे पूरे करें। मैं ये मेरा मकसद ही नहीं है। आप anyway, मैं ये आंसर कर दूंगा। मैं ये बिल्कुल 184(3) के जो कंडीशंस हैं वो भी मैं आपके सामने पूरी कर दूंगा, और वो दो कंडीशंस हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में जी राइटली साइड से independence of the judiciary is a fundamental right. Can we go back to my question before you get into the merits of all these arguments? The question is again, if the law is to be sustained, what is the effect of Section 5, which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Then that full right of appeal is no longer there, it's redundant, it doesn't exist. So what is your, you have read the law now, इसके ऊपर आप बता दें कि what do you have to say? इसी के साथ एक सवाल, ख्वाहिश साहब इधर हूँ जी, जरा 5 मिनट लगते हैं आपको मुझे देखते। नहीं सर, आप उसमें मैं आपसे सिर्फ इसी सवाल का आगे चलते हैं कि इस 4 में लिखा है कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस का बेंच बना सकते हैं ना, तो फुल कोर्ट भी बना सकते हैं ना 4 में। तो फिर 4 को 5 को इकट्ठा पढ़े तो अगर फुल कोर्ट बन गया तो फिर उस केस में अपील नहीं होगी। बस आप इसका भी जवाब दीजिए। बल्कि इसमें तो इसमें एड ऑन क्वेश्चन होगा कि डज दैट नॉट मीन कि हम फिर वंस अगेन खुद ही डिसाइड कर लेंगे, जहां हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का तो फुल बेंच बिठा देंगे? डज दैट अगेन नॉट अमाउंट टू अ पावर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ? So the control factor that there is a right of appeal, which is a substantive right, how can we just say that that right cannot be exercised? It's a substantive right. एक क्वेश्चन और भी इसी में ऐड कर लेते हैं इस तरफ। फैज साहब, टू योर राइट, हम ये भी देखेंगे थ्रू दिस पिटिशन देयर इज एन ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, द एक्ट हैज बीन सस्पेंडेड, वेदर in presence of that order full court can be constituted or not. ये भी जरा देखिए, court can be constituted or not. आप जवाब देना पसंद फरमाएंगे या हम शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट काउंसिल? फिर आप सोच करके आप जवाब दे दीजिए, ठीक है? मैंने तो प्रोपोजिशन कर दी, ठीक है, आप आइए। कौन आर्ग्यू करेगा नेक्स्ट? अच्छा, आप अपना किस पिटिशन में जरा बता दें। तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ जी, तीनों में ख्वाहिश साहब के साथ। To write of 2 counsel is not allowed unless you are separate petitioners. 7 में 6 हम बैठे हैं, एक में आप 7 में मेरी हाजिरी हो गई जी। चलिए बताइए। My lord, the proposition requires to be requested. The fundamental question is whether the parliament has the jurisdiction and the power to promulgate this act or not. No, that is not the fundamental question, with utmost respect. The primary question is whether 184(3) can be invoked. First, you overcome that hurdle, then you argue that. So you have filed a petition not in the normal jurisdiction, you have come in original jurisdiction of the Supreme Court, which is not a right. You have to comply with certain provisions of the Constitution. My lord,
there are number of judgments. I'm not interested in judgments, I'm talking about you arguments. I am making submission, my lord. The Supreme Court at various point of time has held that any clog on the powers of the Supreme Court or the functioning of the Supreme Court is constitutes. हजूर मैं फिर आपको बात समझाया नहीं सका. For instance, let's take income tax ordinance. ठीक है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट के पास. ठीक है, हम क्यों जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करें 184(3) की? ये शायद आपके हिसाब से ये कानून दुनिया का बदतरीन कानून हो सकता है. ठीक है, मगर बुनियादी सवाल 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे तो उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. बता दीजिए कि चलिए पहले वालों को जरा ग्रे एरिया, दूसरे वाले में तो बता सकते हैं ना फंडामेंटल राइट. पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट्री डिबेट इधर नहीं करेंगे. आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटिशन लगाते, वो अलाउ कर देते आपकी पिटिशन, फिर आप हमारे पास एपेलेट जुरिसडिक्शन में आते, हमारे हाथ बहुत खुले होते. अब आपने बहुत नैरो इंतखाब किया है, 184(3) का इंतखाब किया है. My lord, there are number of judgments of the Supreme Court. जजमेंट्स हावी नहीं होते हैं आइन पे. अच्छा, 189 पढ़ लें जरा. ये आप लोगों के जरा गलत फहमी क्यों है? 189, एक सेकंड, 189 पढ़ लेते हैं साथ में. जरा पढ़िए 189. जी.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله I would answer this question. सर मुझे लगता है सारे मेरे कोलीग मेरे खिलाफ हो गए हैं। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जबकि रूल्स के तहत चीफ जस्टिस को पावर दिया चेंज कर दे सर, एक मिनट, रूल को चेंज कीजिए। सुन लेना सर, रूल के तहत अब रूल क्या होंगे? अगर आप 91 पढ़ेंगे, आप वो रूल बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के ताबे होंगे। ऐसा होगा कि रूल स्ट्रगल सर ये हो रही है माय लॉर्ड कि कह ये रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है पिछले अदवार में। अच्छा I don't want to comment on that. इसकी It is not my stature. It is not my function. इसकी I कहीं want my lordship और to be ममालिक seen में something out of the sky. बात सुने प्लीज। इसकी कहीं मिसालें मौजूद हैं? किसी और मुल्क में कोई ऐसी मिसालें मौजूद हैं? मैं उस तरफ आऊंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। What the theme appears to be. मैं अपने कोलीग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इजाजत दे दें और आगाज कीजिए। The theme appears. I just a sentence. Just one question. आप सिर्फ इतना बता दीजिए, why 184(3? Why not 199 before the High Court? कौन सा फंडामेंटल राइट जो है your lordships in a number of judgment have held. जजमेंट तो बिल्कुल सही होती हैं सर। देखिए सर मैं आपको बताता रहा हूँ, कोर्ट के सामने आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा फंडामेंटल राइट I have a right to be dealt in accordance with the constitution and the law. It is my fundamental right. Agreed. And if I find that there is a deviation from the constitutional scheme, it is a question of violation of my fundamental right. And it is. You tell us which one. Which? You can't just say it. It is. You tell us which one. We'll note it. इम्तियाज साहब, ये आप मानते हैं बिकॉज ऑफ जो पीछे पास में 2 डेकेड्स में हुआ है, इस तरह की रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी। 100%. 100. I am a victim of it. एक सेकंड ना, अब ये अब लेट अस जस्ट इसको छोटा कर देते। अब आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा बना है,
लेकिन पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। हम अनइलेक्टेड जजेस जो हैं 15, हम बैठ के ये चीज कर ले तो ठीक होगा। तो फिर तो आप सिंपली आर्टिकल 191 के लैंग्वेज पे आ जाएं, सिर्फ उसी की इंटरप्रिटेशन आपको दरकार है। इससे मायने ये हुआ देयर इज नो फंडामेंटल राइट। आप कहते हैं कानून बहुत अच्छा है, आप खुद अफेक्टी हैं, यही चीजें होनी चाहिए थी तो हम खुद कर देते। सिद्दीकी साहब ये सवाल लिख कहाँ रहे हैं आप? पता नहीं हम तो बोल ही जा रहे हैं, आप हाँ करी जा रहे हैं। सवाल साथी खड़े ये कोई काम मैं नहीं करेंगे। सोच रहा हूँ कि आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4, ऐसे नहीं कहिए, पढ़िए, एक पढ़िए और बताइए। I will first read Article 4. I will first read Article 4. For your starter, actually it is for your starter. आप ये whole of the act को ultra vires कहते हैं या there is any exception? I find the entire act to be ultra vires the constitution because I feel this domain is not available to the parliament and the entire tenure of the section is unlawful. And I will show it to your lordship. ठीक है चलें। Mr. Siddiqui. His lordship, Article 4. Mr. Siddiqui. Article 4. Please, lordship, I have another question. Please explain whether any person of a society could lead a respectable life where the courts are not allowed to function independently? No. Is it not a violation of fundamental rights? Yes. And that has been held by your lordships. It is not it is judgments of your lordship of 10 judges, 14 judges. And I just will never. सवाल तो हमारे सामने ये कि ये जो कानून है ये तो और ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हमारे सिस्टम को और आम आदमी की जिंदगी आसान सर देखिए, मैं एक आपको मैं और वजाहत कर दूं। हम बहुत जजमेंट ओरिएंटेड बन गए। मैंने जो हल्फ उठाया है ना, मैंने ये हल्फ नहीं उठाया। सर सुन तो लीजिए ना प्लीज कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं। आप इससे मुखातिब हो जाए ना। I'm with you. कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ताबे हूं। मैंने हल्फ उठाया, मैं आइन और कानून के ताबे हूं। प्लीज मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर। मैं तो आप जरा सुन लीजिए ना, इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं, मैं उन जजमेंट के ताबे नहीं हूं। आप सुन लीजिए वजाहत से, हो सकता है कोई और हो, मैं नहीं हूं। ठीक है, आप 100 जजमेंट मुझे प्लेस करें, मैं एक भी नहीं पढ़ूंगा। मैं कहूंगा आइन पढ़िए। अगर आइन के इन अकॉर्डेंस विथ है, यहां तो ये चीजें ना करें। रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम लोग बैठ के इधर लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे। वो ख्वाजा साहब चले गए, उन्होंने एक फंडामेंटल राइट का तस्करा नहीं किया। आपसे हम पूछ रहे हैं कि 184(3) पे आ जाइए, फिर 191 पे आ जाइए, फिर आर्ग्यूमेंट्स करिए। बहुत बुरा कानून है, मगर उसके दायरे में लाइए। May I proceed? जी प्लीज। Article 4. I read, my lord. फरमाइए। To enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person of the time being within Pakistan. In particular, no action detrimental to life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. B. No person shall be prevented from or hindered in doing which is not prohibited by law. And C. No person shall be compelled to do that which the law does not require him to do. Now let us go on to the. Not go on to do, develop an argument. Well, I will. Allow me. No, why you read Article 4? Your Lordship had asked me to argue the case according to the way that I want to proceed. Yes, so please allow me. What is the violation of Article 4? What is the violation of Article 4? My Lord, it is mentioned in the preamble of the Act. I am making a submission to your Lordships. क्या साहब जरा प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। आप मानते हैं कि ये बेहतरीन कानून है, यही होना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था 191 में। यही प्रोपोजिशन। अब इसको जिस तरह माय लॉर्ड कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। 191 पढ़ ले, उसमें अगर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है
और सुप्रीम कोर्ट में है, शैल नहीं है। इट इज नॉट द राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इतना बता दें कि जो सब्जेक्ट टू लॉ है, क्या वो रूल्स, उनका स्टेटस उस पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से हायर है या लोअर है? दैट्स द ओनली My lord, I am indebted to my lord. This is the proposition. एक आर्टिकल 4 आप कह रहे हैं, दूसरा कौन सा आर्टिकल है? वो पढ़िए ना सारे आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर आ जाए ना फिर आप। आर्टिकल 10A, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10, sorry my lord, 9. ऐसे नहीं नंबर्स ना दें, बताएं ना। No person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law. आपकी कौन सी लाइफ लिबर्टी ले ली इस लॉ ने? सर हमारे चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप कर रहे हैं। वो मैं जानूं और यही आपका क्या ताल्लुक है? No sir, that is my perception. If your lordship may be inclined to do it, I am going to persuade your lordship this is not a constitutional. तो बहुत ही नॉवल आपने वैसे बड़ा जबरदस्त बहस की कि हमारे चीफ जस्टिस की पावर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और आर्टिकल 9 इफेक्ट हो गया है। Yes, the deviation is that a procedure other than the rules of the वैसे Supreme मैं Court. वजाहत करना चाहता हूँ, मैंने आपको अपना वकील नहीं किया था। शुक्रिया। लोग ये ना समझ बैठे कि आप मेरी वकालत कर रहे हैं। I have to assist you the way the law in this country is developed. चलते हैं आगे ना। ऐसे सदीकी साहब, एक चीफ जस्टिस आपके नहीं है, इस कौम के हैं और कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे होना चाहिए। आपने बताया आइन को भी देख लेना पहले। आइन तो कहते आइन के देखे बगैर, आइन तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट करेगा सब कुछ। सर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप तो कहते हैं चीफ जस्टिस। नो नो, आई से आप अभी तक ये डिफरेंस नहीं क्लियर। नो आई एम, अभी आप अलाउ करेंगे प्रोसीड करने तो करूंगा ना। देखिए सब इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स ना बड़े कौन सी इन्फोर्समेंट करना 9 के बाद 10 10 में क्या है? 10 में कौन सा है? नो, ये तो No person who is arrested shall be detained. इससे क्या ताल्लुक है इस बात से हमारी? सर मुझे प्लीज नहीं ये नहीं आपके, मैं सुबह से शिक 1 से शिक 260 तक पढ़ूंगा नहीं, सॉरी, ये जो हमारा टाइम है ना, इट्स पब्लिक मनी, ठीक है? आप ये नहीं कहेंगे मैं जो मर्जी आर्ग्यू करूं, आप उसकी हमें रेलेवेंस बताएंगे। सॉरी, ऐसे नहीं आर्ग्यूमेंट्स होंगे। साहब, जब आप मान गए हैं कि ये बेहतरीन कानून है, चीफ जस्टिस के इख्तियार जो कुली थे वो नहीं होने चाहिए थे, देवर उनका इस्तेमाल सही नहीं हुआ, अब उसके बियॉन्ड आप जाए, आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो बता दीजिएगा। मैं नहीं मान रहा कि ये बहुत अच्छा कानून है, मैं कह ये रहा हूँ कि इसका ख्याल बहुत अच्छा होगा। आप चाहते हैं कानून, आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस के पास कुली इख्तियार हो। मैं नहीं चाहता, आपने दिया रूल्स के अंदर। नहीं ओहो, आप उसको छोड़ दीजिएगा ना, हमने छोड़ दी सर, आपने रूल क्या आपके नजदीक एक शख्स के पास अनफेटेड, अनब्रिडल्ड, अनअकाउंटेबल, अनट्रेमल्ड पावर होनी चाहिए? यहाँ पे द पावर हैज बीन गिवन टू द चीफ जस्टिस एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस। बहुत अच्छी बात है सर जो आप कर रहे हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस साहब को बहुत पावर दे रहा है। लेट अस हैव अ लुक एट आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 तो देख लीजिए सर। एक सेकंड जरा इसका फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं बहस का। सिर्फ हमें पहला सवाल हम पूछ रहे हैं कि 184 में आने से पहले फंडामेंटल राइट्स वाजे कर दें, कौन सा वायलेट हो? लॉर्ड, योर लॉर्डशिप्स हैव हेल्ड दैट व्हेन ए law is made or election is taken which violates the constitutional scheme, it is a violation of fundamental right. तो स्कीम में कौन सी प्रोविजन बताएं ना सर। मैं आपको, आप मुझे अलाउ करेंगे तो इजाजत बताइए। the law, the constitution requires under the constitution, and I will read the relevant article subject to some breather by your lordships, that in the context of the trichotomy of powers, the parliament will make its own rules, the executive will make its own rules, the Supreme Court will make its own rules for functioning, and those rules have a constitutional force and they are of a higher pedestal than the ordinary law. This आपने हमने जो आपसे शुरू किया था बुनियादी हकूक की बात, अब वो आपने तर्क कर दी। आपने मैं तो आप जवाब नहीं, जवाब ना दीजिए प्लीज, आप आर्ग्यू कीजिए, हम आपकी आसानी पैदा कर रहे हैं, बाद में जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि आप देखिए, मैं भी वकील रह चुका हूँ, जब 6-7 सवाल आते हैं बड़ा मुश्किल होता है,
ठीक है, अब आपने पहले जवाब दे दिया था, बिल्कुल कानून सही है, मगर जब माय लॉर्ड ने सवाल दोबारा पूछा, अब आपने ठहर जाइए ना, जैसे विटनेस कहते हैं ना, अगेन सेज, जिसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुन लीजिए, आर्ग्यू आप कीजिए, आपका केस है, मगर बताएं बुनियादी हकूक कौन सा सलब हो गया, ये बता दें बस। अगर आप ये अगर को एप्लीकेबल करने के लिए पहले हमें बता दें कि कौन से फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करना चाहते हैं जो इन्फ्रिंज हुए हैं, पहले इस पे आइए, ताकि वाई नॉट 199, यही पावर हाई कोर्ट के पास है, वहां क्यों नहीं गए? सर मैं आपको नोट आप I am asking your lordship to recognize my fundamental right given in Article 9, 10, 10A. रेड सर मैंने पढ़ा आपके सामने। चलें, बस यही आर्गुमेंट है जी, आपका? नो सर मैं पढ़ रहा हूँ आगे। नहीं आप बता ही नहीं रहे, कोई प्रोपोजिशन ही नहीं डेवलप कर रहे हैं आप। My proposition मुझे आप my proposition is that the legislature is bound by the scheme of the constitution, and the constitution requires that जब हमने फैसला किया आपसे सवाल नहीं करेंगे। The constitution requires that the legislature will make its own rules. The constitution requires petition, ये आपने अभी बात की, मैंने नोट कर लिया। 3 different organs of the state हैं, they will function independent of one another. One will not make encroachment on the other. और यहाँ तक पहुँचने में हमने बुनियादी बातें तो पता है ना, आगे बढ़िए ना। It is my fundamental right to ensure and protect that this constitutional encroachment is not made by the parliament. ठीक, समझ गए, अगला point. And there are judgments on the issue which says that these are issues of fundamental violation of fundamental right, deviation from the constitution, and if it affects a large community of people, then it is a question of public importance. और जजमेंट है आप नोट कर लें, मैं सर जजमेंट पढ़ने में चाहूंगा, दिस सो फंडामेंटल क्वेश्चन, ये देयर आर न्यूमरस जजमेंट्स। ये इस बात का तयन करना जी आपके पास इख्तियार है, जैसे मंसूर शाह साहब ने जिक्र किया कि ये इख्तियार एक्सप्रेस होता है, या तो हम रेफरेंडम करा लें जहाँ हर मार्शल और डिक्टेटर को 98.6% वोट हमेशा मिलते हैं। अच्छा, सुन लीजिए ना जरा, प्लीज तसल्ली रख लें। जी सर, नहीं सुन, या हमें क्या पता लोगों को क्या चाहिए, उसकी अक्कासी उनके नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट करें उनकी मर्जी है, वो उसकी अक्कासी करते हैं। हम यहाँ तो कोई पोल अगर हमें खड़ कर मैं पूछ लूँ सबसे कौन से इन फेवर ऑफ दिस लॉ है, आपको कौन हक देता है ये करने का? आपको ये हक देता है कि फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आप वो बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने बस 8, 9, 10 बस कोई आर्गुमेंट डेवलप कीजिए। हजूर ऐसे नहीं हुआ आर्गुमेंट। योर लॉर्डशिप इम्तियाज साहब एक दफा फिर एक चीज क्लियर कर दें, अगर ये कानून सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियार को डाइल्यूट करता है, आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज है? ऑब्जेक्टिव अच्छा है, प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सेकंड, इसका मतलब है इससे आपके और पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो वायलेट नहीं हो रहा है, उससे इन्फोर्स हो रहे। तो अब आइन को मद्देनजर रखेंगे कि नहीं? सुन तो लेना। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन ये रह गया है कि जी ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आप अनइलेक्टेड जजेस कर लें, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती थी, भले आप रिफ्यूज भी करें वो फिर भी बेबस है। चले हम आपकी ये भी बात नहीं, बेबस नहीं है। एक सेकेंड, अब आप बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली 191 पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब है नो फंडामेंटल राइट। मुझे अभी तक आपने ना आर्टिकल्स लिखवाने दिए हैं, ना मुझे सबमिशन करने दिए। बताइए प्लीज बताइए। आर्टिकल 4, 9, 10, 10A फंडामेंटल राइट जो है उसको हम इन्फोर्स करना चाहते हैं, सर वो पढ़िए प्लीज। सर मैंने आपको कहा है कि व्हेन ड्यू प्रोसेस इज नॉट फॉलोड in making a legislation by the parliament, forget about the objective. And if I am able to demonstrate to your lordships that a constitutional deviation has taken place, then
the question of fundamental right violation occurs. Whether it occurs in rem or in personam is the next question. अब हमें समझ आई आपकी बात हुई है कि कानून का ऑब्जेक्टिव तो शायद आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोसीजर जो अडॉप्ट हुआ है ये हमें बना लेना चाहिए था, पार्लियामेंट ने क्यों बना दिया, ये सवाल है। अब ऑब्जेक्ट is not access to justice fundamental right now recognized as such? Yes, it is. Is not independence of judiciary an integral aspect of access to justice? Indeed, it is. Therefore, is not independence of judiciary itself a fundamental right? It is. Is not independence of judiciary a salient feature of the Constitution? It is. Held by full court. Do you think every time the full court sits, that allows the Supreme Court, sitting as full court, to reset in the entire constitutional scheme? It would be unfortunate unless it is done with valid बात ही नहीं reasons. सुन रहे हैं, सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, आप जवाब तो आप फिर वही कर रहे हैं. In a system based on the common law UK tradition, is it just the black and white language of the Constitution that is constitutional law, or is that embedded in constitutional law as developed by the case law? In relation to the US Constitution, it is said that 9/10 of US constitutional law is not written in the US Constitution. As sitting as a full court, each time a full court is constituted, is that like a tabula rasa, a blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to say, declare, for example, today that independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. That independence of judiciary is not a fundamental right. If it is not a fundamental right, out goes access to justice. It's not a question of speaking for myself, but putting it as a question to you of whether it is the Chief Justice or the three-member committee. Who is Parliament to say it's a three-member committee? Why shouldn't it be a five-member committee? Why shouldn't it be a seven-member committee? If the answer is that the Supreme Court means the Chief Justice and all the courts, then Parliament should have made a law saying this committee shall constitute of the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court. They are the ones who will decide whatever is written in Section 2 and whatever is written in Section 3. Can Parliament pick and choose? Can Parliament say, no, 3 judges is okay with us, 5 judges is too much, 1 judge is too little? These are aspects that go to the independence of the judiciary. Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Section कौन सा है वो आपका? Section 4. Tomorrow Parliament says जी एक law बना देती है जी, I don't know, family matters are to be heard by a bench of not less than 7 judges. Is that part of access to justice? Is that part of independence of judiciary? It is. Fundamental rights. अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो है, वो जो है आपका राइट ऑफ अबॉर्शन, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? लिखा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं लिखा था, वो राइट दे दिया, पेनम्बरा में आ गया ना। उसके बाद उन्होंने कहा वो ओरिजिनलिज्म पे लोग जा रहे हैं कि जी बस आप देखें जी उसके अल्फाज में लिखा है तो लिखा है, वरना नहीं लिखा, और वो भी जो 200 साल पहले की इंटरप्रिटेशन है। Is this the state of the law in Pakistan? It is not. Is this the state of the law in terms of even full court judgments? But as a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution, the question is, are we to allow any erosion of independence of judiciary, access to justice, and would that not be the grossest violation of fundamental rights? Indeed, my lord. With respect, अगर देखें सिद्दीकी साहब, I have not, मुझे अभी तक आपके खूबसूरत दलाइल से मैं मुफीद नहीं हो पा रहा हूँ। आप जरा अपने दलाइल अपनी मर्जी से कर लें, आप सवाल नोट कर लीजिए, आप हर चीज पे कमेंट, आप अपना दलाइल तो देना चाह रहा हूँ सर। फिर आप कल आप कहेंगे कि मेरे दलाइल ही नहीं सुने जा करके, आप चलें थोड़ा बढ़ा लें आगे बात को। With great respect to my brother,
independence judiciary is not just the external aspect. The most important is internal independence and institutional independence. अब आपने concede कर लिया कि this is a law which actually secures the internal and institutional independence. मैंने नहीं So, किया। ओहो, आपने कहा एक खाली तरीका ठीक सेकंड, नहीं अच्छा लॉ है। इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और वो इख्तियार इस्तेमाल हो सके टू अचीव सर्टन outcomes in cases and by constituting benches, that is a complete erosion of independence of judiciary. And this is an aspect which this court has never taken into consideration. So that is, dunya bhar mein, this is the most important aspect of independence of judiciary. आपको पता है बाकी मुल्कों में क्या होता है? जुडिशियल कैलेंडर